Guys, have you realized that how much time have you passed this year? There are 11 months you guys have passed of this year, but have you learned this language? Have you become a fluent speaker? Have you become a fluent speaker? You haven't. Whoever whoever wants to learn this language, they just have to start learning from that day when the thought of learning this language came to their mind. आपको उसी दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए जब आप सोच रहे हो कि मुझे ये लैंग्वेज को मुझे सीखना है. दिस इज गोइंग टू बी वेरी रिलेवेंट लैंग्वेज फॉर मी, सो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज फ्रॉम दैट डे विदाउट थिंकिंग अबाउट other steps, without thinking about I don't have the facility, I don't have the faculty, how can I improve this language, I don't have partner. Without wasting on these kinds of unnecessary things, you need to start learning this language now. First step you should follow, that is you have to start listening a lot. Whatever you are watching in Hindi language, you have to stop watching all the content in Hindi language. Just start watching, start consuming the content in English language, only in English language, and that will make you feel that you have so many things in this language. You are filled up with so many kinds of new things. You are filled up with new sentences, new grammatical things, vocabulary in this language, and that will give you the sentences while you are speaking. That will not let you feel down while speaking. That will not let you feel that you are not able to speak while speaking. The words are not coming to your mind. If you will listen a lot, यदि आप listening practice करोगे ना जितना ज़्यादा हो सके, इंग्लिश सुनोगे ना, तो आपके माइंड में ये चीजें नहीं आएंगी कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, बोलते समय आपके माइंड में वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप लिसनिंग करते ही नहीं हो, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस लैंग्वेज. व्हेन अ किड इज बॉर्न, क्या उसे कोई लैंग्वेज आती है? नहीं आती ना. तो पहले क्या करता है वो, वेन एवर एनीवन इज टॉकिंग, क्या वो सुन रहा होता है? Directly or indirectly, he or she is listening to that sentence, to those I mean sentences. वो सुन रहा होता है ना. तो क्या वो बोल रहा होता है उस समय? नहीं ना. क्या वो पढ़ रहा होता है? नहीं. केवल केवल वो सुन रहा होता है, और एक समय के पश्चात वो सुनते 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 उसके माइंड में वो सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं. देन he or she is trying to speak, he or she is trying to speak some of the words जो उसके माइंड में फिक्स हो गए होते हैं, वो भी बोलने का प्रयास करने लगता है. क्या उसे पहले से ही आ रहा होता है सब कुछ? नहीं, बिकॉज उसने प्रैक्टिस की, इनडायरेक्टली ही प्रैक्टिस की ना लिसनिंग की. तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग द फर्स्ट स्टेप you must follow, that is listening practice. That will make you a fluent speaker, that will make you a very good speaker in this language, in any language whatever you are going to learn. लिसनिंग ही है जो आपको एक फ्लुएंट स्पीकर की जर्नी में ले जाएगा. तो दैट मस्ट बी योर फर्स्ट स्टेप. एंड मैं और कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में. आई विल नॉट टेल एनीथिंग apart from this step because you are a beginner. I just took you as a beginner. So आपको पहले यही स्टेप फॉलो करना है फॉर अ मंथ. एक मंथ के लिए आप कुछ नहीं देखोगे हिंदी में. आपको जो भी देखना है इंग्लिश में देखना है, जो भी सुनना है इंग्लिश में सुनना है. आपको इंग्लिश लैंग्वेज से खुद को सराउंड करना है. यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद दिस लैंग्वेज. आपका पहला टास्क यही होना चाहिए. दैट मस्ट बी योर फर्स्ट स्टेप. एंड अदर स्टेप्स आपको एक महीने के बाद फॉलो करने हैं. तो ये पहले स्टेप्स को फॉलो कर लो, इस स्टेप को फॉलो कर लो, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे. एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग अदर स्टेप्स. So I think you have got all the points. I think you have got this point, this very important point here. So I think making of this video helped you a lot. If it helped you a lot, you have to comment on this video that you are doing good or not.
If I'm not doing good, you have to comment. So have a good day. We will meet in another video. Bye bye.